Assalamualaikum. Hello everyone. Hope you all are doing well. Today I am here with another topic of economics. Firstly, let's recall the general overview of economics. Economics is the social science that is concerned with production, distribution, and consumption of goods and services. And goods and services are all those things which we can utilize to fulfill our basic needs. Alright, so today I am here with another topic of economics which is law of dimensioning marginal utility. आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है और डायमेंशनिंग इफेक्ट कैसे आता है उसके ऊपर. ऑलराइट, so when we discuss about the law of dimensioning marginal utility, we all should have to know about what is utility and what is marginal utility. Alright, so let's know about the term utility. ठीक हो गया. So utility in economics, utility refers to the satisfaction level consumer receive from buying and using a product or service. According to the utility theory, people make purchases decisions based on the degree of satisfaction they get from an item or service. That's why goods with higher utility are prioritized higher in a person budget. Understanding what utility it can also provide insight in which what demands drive demands and prices. Alright, for example, a consumer can purchase a sandwich so they are no longer hungry. Does the sandwich provide some utility? ठीक है, कोई भी चीज़ हम ले रहे हैं, हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, चेंज होता रहता है. पहले हम उसके लिए सेटिस्फाइड होते हैं चीज़ के लिए एंड आफ्टर दैट सेटिस्फेक्शन लेवल में डिफरेंस आता रहता है. ठीक है, यूटिलिटी मीन्स द पावर, quality or ability of a good that satisfied human wants. For example, water has the power to quench thirst, and bread has ability to satisfy hunger, and pen has the quality of writing. So utility is a relative term with respect to time, space, use and demand. Alright, so next हम देखते हैं कि marginal utility क्या होता है. Marginal utility is the enjoyment a consumer gets from each additional unit of consumption. It calculates the utility beyond the first product consumed. ठीक है, for example, if you buy a bottle of water and then a second one, the utility gained from the second bottle of water is the marginal utility. Alright, so हम देखते हैं डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है. The law of dimensioning marginal utility directly relates to the concept of dimensioning prices. ठीक हो गया. As the utility of a product decreases as its consumption increases and consumers are willing to pay smaller dollar amounts for more of the product. ठीक हो गया. For example, assume an individual pays $100 for a vacuum cleaner because he has a little value of a second vacuum cleaner. The same individual is willing to pay only $20 for a second vacuum cleaner. ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्राइसेस के इफेक्ट की वजह से हम कैसे अपनी जो नीड्स को पूरा करने का, हमें उस चीज़ की नीड नहीं भी है तो भी हम उसको खरीदें बिकॉज ऑफ द लेस प्राइस. Alright, so here is the law of dimensioning marginal utility. The law of dimensioning marginal utility means that the more of an item that you use or consume, the less satisfaction you get from each additional unit consumed or used. ठीक है, अब law of dimensioning marginal utility basically हमारे पास क्या है कि जैसे जैसे आप किसी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जैसे जैसे आप उसकी कंजम्पशन बढ़ाते हैं, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाता है, कम होता रहता है उससे. ठीक हो गया. दिस इज द बेसिकली द लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक हो गया. सो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है ये लॉ. Alright, so imagine you can purchase a slice of pizza for $2 and you're very hungry, so you decide to buy 5 slices of pizza. When you eat
first slice of pizza, you gain a certain amount of positive utility from eating because you were hungry, and this is the first food you are eating. The first slice of pizza has a high benefit, okay? And after you eat the second slice of pizza, your appetite is becoming satisfied and you are not as hungry as before. So the second slice of pizza had a smaller benefit and enjoyment than the first. The third slice holds even less utility since you are only a little hungry at this point. And the fourth slice of pizza has experienced a diminished marginal utility as well. Alright, so it might be difficult to eat because you are already full from the first three slices. Finally, you can't even eat the fifth slice of pizza, and you are so full from the first four slices that consuming the last slice of pizza results in negative utility. Alright, जैसे जैसे आप पिज़्ज़ा की स्लाइस बढ़ाते जा रहे हैं, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, ठीक है? Because you became full. Alright, so अब हम एक शॉर्ट सा वीडियो देख लें, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है? Diminishing marginal utility is a law of economics stating that the more you consume a good or use a service, the less satisfied you will be with each successive use or consumption. To understand the law of diminishing marginal utility, think about eating pizza when you're very hungry. For example, Alex hasn't eaten all day. She finally bites into a slice of pizza. As Alex eats that first slice, she believes it's the most delicious thing she's ever tasted. The second and third slices of pizza are also satisfying to her, though not as much as that first slice. By the fourth slice, Alex is quite full. Alex eats a fifth slice, even though the pizza is no longer enjoyable for her. After the sixth slice, she feels sick. The more Alex consumes the pizza, the less benefit she derives from it, until eventually it takes away from her level of satisfaction. The law of diminishing marginal utility is an important concept in determining consumer preferences. It assumes consumers are rational and will spend money in a way that maximizes their contentment with each subsequent unit without negatively affecting their total enjoyment. While Alex may have derived positive utility from the first few slices of pizza, eating the entire pizza was not a very economical choice. Alright, so here are some assumptions of this law. हम देख लेते हैं कि इस law के assumptions क्या होती हैं. The law of diminishing marginal utility make several assumptions. And the goods being consumed are identical, and the units are consumed quickly with few breaks in between. Units are not too big or not too small, and the consumer taste is constant, and there is no change in the price of goods of their substitutes, and the unit can be measured, and the consumer is making rational decisions about consumptions. Alright, so ये कुछ assumptions थी इस लॉ की जो हमने देख ली हैं. Alright, so अब हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है. इम्पोर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डायमेंशनिंग return. Alright, so the law of diminishing marginal utility is important in economics and business. Because it predicts consumer behavior, it can be used by business to find the balance in supply and production. It can inform our business marketing and sales strategies as well. Alright, so ये importance थी इस law की. अब हम एक टेबल देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसका इफ़ेक्ट होता है. ऑलराइट, सो हाँ जी, ये थोड़ी सी डिटेल है. इन टेबल पे आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर. इन दिस टेबल वी हैव प्रेजेंटेड द टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटीज derived by person from cups of tea consumed per day. When 1 cup of tea is taken per day, the total utility derived by the person is 12 units. And because this is the first cup and its marginal utility is also
देख लेते हैं हम. विद द कंजम्पशन ऑफ सेकेंड कप पर डे द टोटल यूटिलिटी rises to 22 and marginal utility falls to 10, and it will be seen from the table that as the consumption of tea increases to 6 cups per day, marginal utility from the additional cups goes on diminishing and decreasing, and the total utility goes on increasing a diminishing rate. All right. So however, when the cups of tea consumed per day increase to 7, then instead of giving positive marginal utility, the 7th cup gives negative marginal utility, okay, equals to -2. Alright, this is because too many cups of tea consumed per day, say more than 6 of a particular individual, may cause him acidity, and thus the extra cups of tea beyond 6 to the individual in question given to him, and this utility rather than the positive satisfaction. ठीक है, आप टेबल पर देख रहे हैं जैसे जैसे आपकी यूटिलिटी बढ़ रही है 12, 22, 30, 36, 40, 41, 39, 34 पर डे कंजम्पशन के हिसाब से जो टी ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो रही है 10, 8, 6, 4, 1 एंड इवन इट गोज टू नेगेटिव. ठीक है, मार्जिनल नेगेटिव हमारे पास वैल्यू आ रही है -2, -5. ठीक है, यहाँ से भी हमें क्लियर हो जाता है कि जैसे जैसे हम ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं हमारी सेटिस्फेक्शन क्या होती है, कम हो जाती है. राइट, सो अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. इससे ज़्यादा क्लियरेंस हो जाती है हमारे कॉन्सेप्ट्स में. यहाँ पे अब आप ग्राफ देख रहे होंगे, टोटल यूटिलिटी हमारे पास इसमें है एंड मार्जिनल यूटिलिटी यूनिट्स. ठीक है, सो द ऑरेंज लाइन डिनोट्स द मार्जिनल यूटिलिटी एंड द ब्लू लाइन्स डिनोट्स द टोटल यूटिलिटी. तो आप देख रहे हैं जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग है और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है. सो इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग और इवन इट्स वैल्यूज़ हमारी नज़र आ रही होंगी आपको कि वो x से बिलो हैं, मतलब कि नेगेटिव वैल्यूज़ भी हमारे पास हैं जो कि हमारे पास पिछले टेबल में थी -2 and -5. All right, so this marginal utility curve goes on declining throughout and even falls below the x-axis. Portion below the x-axis indicates that the negative marginal utility. Okay, so this downward sloping marginal utility curve has an important implication of the consumer's behavior regarding demand and for goods. So we shall explain how the demand curve is derived from marginal utility curve. The main reason why the demand curve for goods slope downward is the effect of diminishing marginal utility. ठीक है, so the significance of the diminishing marginal utility of a good for the theory of demand is that the quantity demanded of a good rises as the price falls and vice versa. Thus, it is because of the diminishing marginal utility that the demand curve slopes downward. ठीक हो क्या? अभी हमने देख ली है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. सो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि कैन मार्जिनल यूटिलिटी बी ज़ीरो. ठीक है, कि अब जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना कि हमने यहाँ पे देख लिया कि मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है और कम होते होते ज़ीरो पे गई है एंड ज़ीरो पे होते होते नेगेटिव में चली गई है. ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कैन मार्जिनल यूटिलिटी बी ज़ीरो. सो यस, मार्जिनल यूटिलिटी नॉट ओनली कैन बी ज़ीरो बट इट कैन ड्रॉप टू बिलो ज़ीरो. ठीक है, consider a summer barbecue. If you have not had breakfast yet, that first grilled chicken leg piece will be delicious and the second one won't be bad either. After a while you will become averse to eating the barbecue and may even get sick, have a negative utility if you continue to eat more. ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि हमारे पास जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती है, कम होकर ज़ीरो भी होती है और ज़ीरो से कम होते होते बिलो ज़ीरो होती है और हमारे पास वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव में. और हमारे पास ग्राफ कैसे शो होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. ऑलराइट, सो
Here we end our lecture. Let's preview the lecture. आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? हमने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा, मार्जिनल यूटिलिटी देखा, डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखा कि कैसे उसका डिक्रीजिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। एंड देन हमने देखा कि लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ठीक हो गया। फिर हमने इसके एग्जांपल देखी। एग्जांपल किसी भी टॉपिक को, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एग्जांपल बहुत हेल्पफुल होती है, ओके। सो हमने उसका टेबल देखा, टेबल में थोड़ी सी हमने उसकी एक्सप्लेनेशन देखी। आफ्टर दैट हमने उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी और फिर इससे हमें क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है और क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, और वो ज़ीरो भी होती है, वो नेगेटिव में भी होती है, और वो कैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, सब हमने आज के लेक्चर में देखा है। होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। होपफुली आपकी आज के टॉपिक के हवाले से आपके सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, ओके। थैंक यू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ एवरीवन अराउंड यू. Like the video, share it, and subscribe the channel if you want to know about the other topics and videos about economics. Thank you. Allah Hafiz.